If you open your eyes to it, all you have to do is that if three persons, according to the record, if ECP checks, PTI becomes a party of 3 members of 4. And then there is a party on the table, and then the independents have a choice to take their vote. Everything falls in place. So if that is not what justice is, I don't know what justice is. My lord, I takes in that since a lot has been said from this side, and since I may not subscribe to a number of things that don't expect this, justice, we all want justice, but it's a very elusive concept. If you go on personal justice, my concept may be different from your concept. Someone may be in favor of capital punishment, someone may be against it. On a justice principle, do we apply justice principles? We apply the law and the constitutional provisions. Now, read all the judgments of this court which introduce the doctrine of necessity, and all of them rely upon the justice principle. Les populi, Keynes's pure theory of law. This is actually they had lost the thing of the people. Every judgment has been based on premise. If they had simply followed the constitution and said, this is not permissible, you cannot take over, you cannot send elected representatives home, that would be the letter of the constitution. I'm not even going to the spirit of the constitution. When judges, some of them may have great wisdom, I am not one of those, say, forget what the constitution say, there is this one word, justice, and I'm going to erect an edifice on the basis of this one word, then we might as well do away with the constitution, because we are now imposing our vision on the nation. We are imposing what the constitution says. Hang on, constitution makers, you didn't quite get it right. We know what justice is. We are imposing our will on parliament. When we go into these vague concepts, we get into all sorts of troubles which are history. It's not academic anymore. Since mention was made of doctrine of necessity, it was on these very principles. When they can't find anything tangible to hang on to in the constitution, then opens the doors, because I can define justice any way I want to, someone else will define it any other way. So are we going to have this academic, and this is not even something which has really been argued, and I don't want to stick my neck out or let it come from as if it's a thing of the court saying this, that the doctrine of necessity was done, I think on the very principle or the concept, or what they borrowed, what they in their hearts or in their conscience, I would even go that far, they genuinely believed it. I wouldn't even say that, I wouldn't even attribute any malafide or ill intent to any of those judges. They genuinely believed it. I don't want, let's Pakistan go on the constitutional path for once. Learned Counsel, I think you finished your My lord, I have. Attorney General, you haven't answered my question. Do we validate? These are our opinions. Do we validate a grave constitutional violation which has become obvious before us? That is inclusion. Premised on something. That is not premised. That is the orders have come before us. It has become obvious. You want to respond? We are Please ignoring the elephant in the room. My lord, I will now just, there are 4 judgments, one authored by Justice Shah on 187, one of the bench of which Justice Munib Akhtar was part of, and 2 other judgments on 187. The limitations which I have placed before you in 187 is what the law, what the constitution says, how the courts have read it. If the court wishes to read it differently, it's a full court, the court can. I'm placing these 4 judgments before you. But on what principle? Just tell us the principle. 4, sir. Are they on the same principle or different principle? Which I've just read out while explaining 187, that it's a power, not a jurisdiction. There has to be a list before your lordship. While looking at, you should be leased with the seize of the list while applying 187, but you cannot initiate independent proceeding by invoking 187 beyond what is before you.
Yes. With that, I will conclude my submission. Most grateful. Thank you. Attorney General, sir, my question, what would happen to those independent candidates who have neither joined any parliament party or nor political party? What would happen to those independent candidates? वो independent रहेंगे अभी तक. तरह जबकि लॉ कहता है कि 3 दिन के अंदर उनको ज्वाइन करना है पार्टी. ऑप्शन है सर, ऑप्शन है. तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो आजाद रहेंगे सर. वो यानी वो फॉर द पर्पसेस ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी पार्लियामेंट के अंदर आजाद रहेंगे सर. Sorry. They will not remain independent. They have to join some political party. देखिए ना, लॉ तो यही कहता है कि 3 दिन के अंदर ज्वाइन करो. फिर वो अब आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट, कैसे रहेगा इंडिपेंडेंट? फिर वो इट्स एन ऑप्शन. मैं द वे आई रीड इट, वो एक ऑप्शन क्रिएट कर रहा है. अगर वो ऑप्शन अवेल नहीं करते तो वो पार्लियामेंट में जाके एज अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस रख लेंगे. अटॉर्नी जनरल साहब, ये जो डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया है इलेक्शन कमीशन ने CMA नंबर 5840 ऑफ 24 में, पेज नंबर 19 पर सीट रिजर्व फॉर वुमेन नेशनल असेंबली 17 इन्होंने नेशनल असेंबली में सीट ऑब्टेन करी हैं और 10 इनको मिल गई हैं रिजर्व सीट्स, तो इनकी 27 सीट्स हो गई हैं. पीपल्स पार्टी ने 1 ऑब्टेन करी है, 2 इनको बोनस में सीट्स मिल गई हैं, 3 हो गई. इसी तरह से सबसे बुरी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां मुस्लिम लीग ने 36 सीटें ऑब्टेन की हैं और उनको 21 सीटें मिल गई हैं रिजर्व सीट्स. इसी तरह से PPP ने 3 सीटें ऑब्टेन करी हैं, 1 उनको बोनस में मिली है. PMLN को इस तरह से मिली है 1 सीट, 2 उन्होंने ऑब्टेन करी हैं. और यहाँ पर जो और सूरत हाल है नॉन मुस्लिम की, JUIP की 0 सीट्स थी, उनको 2 सीट्स मिली है नॉन मुस्लिम्स की. ये और जिन्होंने कोई, आप कहाँ देख रहे हैं सर? ये पेज नंबर 20 पे 580 पे जो सीट्स एलोकेशन है रिजर्व सीट जो ऑब्टेन करी नॉन मुस्लिम्स की. जी नॉन मुस्लिम्स की खैबर पख्तूनख्वा में 0 सीट्स JUI मुस्लिम्स की तो रिजर्व सीट फॉर नॉन मुस्लिम प्रोविंस में तो नहीं होती हैं सर. इसमें 2 सीटें इन्होंने ऑब्टेन करी वो फिर विमेन की होंगी. नॉन मुस्लिम्स तो सिर्फ नेशनल असेंबली में होती है. प्रोविंशियल असेंबली में भी है. जो डेटा मेरे सामने है, सर प्रोविंस में है. you're right. प्रोविंस में 2 कोई सीट उन्होंने ऑब्टेन नहीं करी, 2 सीट्स हैं उनके पास. बिल्कुल. आपका जवाब क्या है कि ये कैसे इनको, मतलब जितनी सीट्स उनकी नहीं है उनसे डबल ट्रिपल उनको मिल रही है, 3 गुना ज्यादा मिल रही है. एक फारसी का एक मकौला है एजी साहब, जी सर. हिस्सा बकदर जुस्सा, जी यानी जितनी आपकी साख्त होगी उसके मुताबिक आपको मिलनी चाहिए. उससे बढ़कर एक सवाल ये आ रहा है कि मिल सकती है या नहीं. मैंने वो आपको एक्सप्लेन आपने वो किया था. इम्पैक्ट वाला इसीलिए कैलकुलेशन नहीं दिखाया. इम्पैक्ट वाला आपसे Impact पूछा वाली था, कहाँ you है? left वो that मुझे question. जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा था कि आपका काम ये कैलकुलेशंस करना नहीं, नहीं आपने है. वो अभी इलेक्शन कहा. कमीशन आपने डॉक्यूमेंट आपने अभी वही लगा- तो आपको रिकॉर्ड दिया मैंने. आप कैलकुलेटेड. लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंस को See, nahi, ऐसे नहीं, that's unfair. नो आई एम सॉरी अगेन My observation that anything to do with the calculation of seats, that is the mandate of election commission. However, I'm not stopping you from responding to any question posed to you by a honorable member of the bench. And you said you will take did us. not mean it that way, my And you said you'll take us to the impact. जी You इम्पैक्ट parked आपने my question yet again and said I will answer it in the end. madam- So the end has come, so please answer my and is question. not coming but नहीं, he said so. the question by ladyship there were so many questions. इम्पैक्ट आपने कैलकुलेट नहीं ना किया हुआ. तो इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट आपको कैलकुलेट करके you meant नहीं, आपने by लगाए हुए हैं including ना? independence आपने by डेटा including दिया हुआ है, independence. उसी पर यूनिक आ जाए. सिचुएशन हुई है, यूनिक सिचुएशन. आप अपने डेटा पर आ जाए ना, so we can कैलकुलेशन गलत हो understand. जाती है. अगर आप उसको एक्सक्लूड करते हैं ना इस साइज ऑफ इंडिपेंडेंस को, तो वो आप अगर होल हाउस गोज ऑरी. That's the my problem. submission is that it does not, but if you include them, then you will come to perhaps when you look at the calculations, you will see See, because that, the whole problem stems one party from... might end up getting नहीं, नहीं. against one seat, one reserved seat for You see, non-Muslims. the problem here is that it all stems from the Election Commission's understanding of what is a political party and what is not a political party. They gave us their legal submissions and said that 6 elements must exist for it to be a political party. You are saying that no, those 6 elements, no, not all of them have to be there, and yet a political party which is not a political party as per their definition can become a parliamentary party. It appears to be highly confusing, and that is why this confusion has arisen, where you have over 99 independents and you've put them all out and just taken 10 into consideration. तो वो who impact joined lopsided political नहीं हो जाएगा. देखें आप प्लीज
अगर जब इनकी दरखास्त गई इन इंडिपेंडेंट्स की इलेक्शन कमीशन में कि हम एक्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दरखास्त वहां दे देते कि हम पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड द इलेक्शन कमीशन हैड रिजेक्टेड दैट एप्लीकेशन एंड दे हैड कम बिफोर यू दैट द इलेक्शन कमीशन इज रिफ्यूजिंग टू अलाउ अस टू ज्वाइन दिस पार्टी एंड देन कॉन्स्टिट्यूट The अ problem पार्लियामेंट्री stems from a पार्टी। confusion that starts on 22/12/23. आप उसके You बाद can't भी ignore events हुए हैं that, ना, you see. आ जाते हैं आपके पास तो क्या आप प्रॉब्लम स्टार्टिंग था? पॉइंट इग्नोर कर देते हैं. नहीं मैं नहीं इग्नोर करता, कोई वो हो फर्क गया नहीं उसका। पड़ता. नहीं वो हो गया, उसके बाद भी These रिमीडियल are स्टेप्स हो people, सकते थे। independents who are not independent because they've held themselves out to not be वो independent. फिर एसआईसी नहीं ज्वाइन करते, पीटीआई कर लेते नहीं, हैं, that- इसमें क्या प्रॉब्लम था? Okay, you concluded. Now, how long will you take in reply? 15 minutes. And anybody else? Just Conclude today. So we can Khaira Sahab, your 10 minutes is about no, 1 hour. because आज हमारी एक मीटिंग भी है. We don't want to rush you either. We can do it on Monday नहीं सर, or any मैं other day which you want. 10 मिनट में खत्म कर लूंगा एंड 10 मिनट में ये 10 आप सवाल होंगे फिर खत्म नहीं होता ना. Let's not rush आप it. आपकी मंडे को वो दूसरा केस सर मुझे तो 15 मिनट चाहिए. आई लीव इट टू योर लॉर्डशिप. 25 मिनट सवाल. 15 plus- आप लोग करेंगे तो कुछ हम लोग भी शायद सवाल पूछने फिर मंडे ठीक है. मंडे को कर लेते There's another bench on Monday. वो आगे कर लेंगे. टुमारो आई एम अवेलेबल. कोई और बेंच है तो ट्यूसडे कर लें. Monday another bench, special bench. इट्स नॉट पॉसिबल दिस वीक सर. कल क्यों नहीं कर रहे? कोई प्रॉब्लम हो रहा है. It's a nice city. आई एम नाउ. ठीक है आप ये फैसल साहब, आपका हमेशा कोई बहाना जो है वो डोमेस्टिक होता है. सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम. नो सर, द डोमेस्टिक प्रॉब्लम इज ऑन अ फॉरेन ट्रिप. इसमें लिखिए. इन्होंने सम्मान लकी है जा सकते हैं. इसमें लिखिए learned Attorney General has concluded his submissions to come up on Tuesday, date डाल दीजिए July 2024 at 11:30 a.m. to hear submissions in rebuttal. Yes. ठीक है, ठीक. If any तो की जरूरत नहीं है. If any तो आप करना है. ठीक है, if any ना लिखें. How many? Thank you. Thank you, sir. Thank Now you to your 15 minutes. you. I will keep myself to the के bench के बारे में मैं नहीं कह सकता सर. You've taken a dig at the end. I can see your lordship. You've taken a dig at us at the end. I can see your lordship also doesn't have a control over. Thank you, sir. Another dig. गलत बात.